Assalamu alaikum guys, this is Zaman Sajid here. I hope you all are doing great. First of all, I want to welcome all of you to this course called English Grammar course. इस कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ और इंशाल्लाह we will go towards the advanced level English. If we have the concepts, अगर हमारे basic concepts clear हैं, so definitely we can understand English, we can write English and we can speak in English. Right? So if you're the beginner, definitely this is the right place. आप इसमें I just want you guys to give attention. आपके first of all I want you guys to have a plan. आपके पास program होना चाहिए कि you are going to learn English language. It's not a subject, it's a language. And then I want everyone to participate. How can you guys participate is like you guys should have notepads in front of you when you're watching these kind of this video, and also I want you guys to have a pen or pencil जिसके अंदर जब भी आप कोई नई चीज़ सीखें, or if I ask you to write down this, you guys should be writing it down. ठीक है, जिस अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह I can guarantee you or I can assure you definitely you can learn English, you can teach English after that as well. So let's get started. First of all, as everybody knows about alphabets, right? There are 26 alphabets. जिसको हम ABC कहते हैं, हम ABC के हमारे पास 26 alphabets हैं, like 26 letters हैं, ठीक है? So let's just talk about कि हम उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं. वो किस तरह से करते हैं? हम उनको कुछ को हम कहते हैं vowels and some of them we call it consonants, right? अब हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि vowels क्या हैं and consonants क्या हैं. Alright, so as you guys can see on the screen, okay, so vowels are these words. Vowels हैं A, E, I, O, U. So first of all, this is what I want everyone to write down on the notebook. Vowels are A, E, I, O, U. उसके बाद जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं एक्सेप्ट 7 Y के अलावा जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं we call consonants. अब उसके बाद जब हम बात करते हैं स्पेशल वॉवल की, so we say Y is a special vowel. A lot of people don't know about it, but why we call it special vowel is कि sometimes Y जो है हम उसको as a vowel use करते हैं और sometimes हम Y को as a consonant use करते हैं. So I guess यहाँ तक everybody is okay, right? So what we have discussed, हमारे पास दो टाइप्स हैं, vowels and consonants. vowels के अंदर हमारे पास आते हैं A, E, I, O, U. consonants के अंदर हमारे जितने भी alphabets बाकी हैं, like out of 26 हमने 5 vowels हैं and 1 is special vowel. बाकी हमारे पास जितने रह जाते हैं we call it consonants, and उसके बाद Y is a special vowel. So let's just proceed further. So if somebody asks you what are the vowels, right? So we'll say A, E, I, O, U and sometimes Y, right? So this is actually the definition of vowel. A, E, I, O, U and sometimes Y. So for you guys need to understand all English words have vowels, right? I'm just gonna guide you कि हम Y को किस तरह से like when we gonna be assuming कि Y जो है the vowel use हो रहा है या as a consonant use हो रहा है. So let's get started. सबसे पहले you guys should know कि all English words have vowels, right? For example, on your screens you can see cat, right? So A is a vowel, egg, E is a vowel, hit, top, cut. So we can see कि जितने भी हमने अभी तक words बोले हैं, in each and every word there is a vowel, right? So A, E, I, O, U. So as we mentioned, as we say, जो A, E, I, U are the vowels. अब हम बात करते हैं कि as we have mentioned कि sometimes Y. So when
कब हम y को एज अ वॉवल यूज़ करेंगे एंड कब हम y को एज अ कॉन्सोनेंट यूज़ करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर सेइंग y, सो इस जगह पे y की जो आवाज़ है इट्स लाइक I, लाइक y, राइट. सो it will be used as vowel, right. जब voice, if the voice sounds like I, that means we will say it's a vowel, right. और यहाँ पे आप देखें bicycle के अंदर is also like bicycle, right. So it's also like I. And in the pretty it's like E, pretty, right. So जब हम बात कर रहे हैं y के बारे में, so whenever it sounds like I or E, we will call it vowel. And if it sounds like ye, like you, yes, ye, it's gonna be used as consonant, right. So और उसके अलावा जब भी y के साथ कोई word start हो रहा है, so it will be used as consonant, right. So we need to know what we have learned so far is जब हम y की आवाज़, फर्स्ट ऑफ ऑल जब y जो है उसकी आवाज़ I की तरह निकलती है, लाइक y, bicycle, और या pretty लाइक E की तरह से, so we will use y as a vowel. और जब y से कोई word या कोई sentence start हो रहा है, so हम इसको कहेंगे, we will consider y as a consonant. और जब y की आवाज़ is just like ye or yeah, yes, you, so we will be using y as a consonant. I think you guys have understood, so see you guys in the next video.